Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss continuous mapping. हमने रियल सेस में फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यू जैसे कंसेप्ट को डिस्कस किया ही है. वहाँ पर हम हमेशा इस स्टेटमेंट को बोलते हैं दैट एफ एक्स इज क्लोज्ड टू एफ ए व्हेन एक्स इज क्लोज्ड टू ए व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी. ओके, बट वहाँ पर क्लोजनेस का मीनिंग था कि वी आर टेकिंग अ पेयर ऑफ पॉइंट्स और फिर हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे थे विद यूजिंग द यूजुअल मैट्रिक, राइट. बट क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं और एक ही नॉन एम्प्टी सेट पर हम एक से ज़्यादा मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है दैट कैन बी डिफाइंड एज पर द मैट्रिक विच इज़ डिफाइंड इन मैट्रिक स्पेस. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस, जहाँ पर हम फंक्शन के लिए जो क्लोजनेस का मेजरमेंट है वो मैट्रिक की हेल्प से देखेंगे. ठीक है, सो लेट मी राइट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, so suppose we have let x comma d and here we have x, so this denotes whenever dx is written इसका मतलब वो x में मैट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, एंड y comma dy be metric spaces, and suppose a is a subset of x. ठीक है, now a function f that is defined from a to y, where this a is subset of this x, so you can say we are defining function from x to y, and particularly here we are taking domain as a is said to be continuous at a belongs to a. Here this must be noticed कि जो जिस एलिमेंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट विच इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ओके, इफ you can see if for every epsilon positive there exists some delta positive such that we have the following one, that is if we measure the distance between fx and fa in y, fx and fa, that should be less than epsilon whenever we have distance in x of x comma a is less than delta. ओके, सो यहाँ पर जो हमने रियल सेस में पढ़ा था जहाँ पर यूजुअल मैट्रिक थी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, एंड यहाँ पर हमने पढ़ा था मोड ऑफ एक्स माइनस ए. तो जब ये यूजुअल मैट्रिक की फॉर्म में डिफाइन होंगे तो ये वही एक जनरल केस ही बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन द कंटिन्यूटी on some set, then function has to be continuous at every point of the set A. Okay, so next we are going to define this thing only. So if f is continuous at every point of A, then it is said to be continuous on the set A. ठीक है, नाउ वी हैव सम रिमार्क. हमने कहा कि दिस थिंग विल बी हैपन व्हेनेवर दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके,
अब हमने कहा लेस देन डेल्टा, हमने कहा जैसे ही इसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है हमें ये मिलेगा। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन सम डेल्टा वन वेयर दिस डेल्टा वन इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब अगर वो डेल्टा वन से ये डिस्टेंस लेस देन है तो वो डेल्टा से भी लेस देन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा हमेशा यूनिक ही मिले, ऐसा केस कभी भी नहीं होगा। वी कैन हैव अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सच डेल्टा for which whenever the distance between x and a is less than delta, then the distance of the images at these function these points, that is fx and fa, that will be less than epsilon. Okay, so we have some remarks, and this is 3.1.2 first remark, and this first remark is about that delta is not unique. Okay, so if one delta positive satisfy the condition, then every delta 1 positive such that delta 1 is less than delta also satisfy it. Okay, this is obvious because whenever x belongs to a and we have that distance in x between x and a is less than delta 1, and of course this delta 1 is less than delta, then we can say then it is true, it is also true that this x belongs to a, and in case where this distance is less than delta, and of course this delta 1 is less than this delta, so we can say and distance in x of x comma a, that will be also less than this. Okay, so therefore such a number delta positive is not unique. ठीक है, so this is one observation. Now let me tell you one more observation. हम जब किसी भी फंक्शन के लिए किसी इस सेट जो इसका डोमेन है उसके किसी पॉइंट पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो क्या ये कॉन्टिन्यूटी हम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं क्या हम ए का कोई भी पॉइंट लेकर उस पर कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं? The answer is yes, we can choose any kind of point when we are coming to the discussion of continuity. बट अगर हम इससे प्रीवियस की बात करें, अगर हमें इस फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर लिमिट की बात करनी हो, then that point has to be a limit point for the domain of this function. Okay, but the case when we are coming to the discussion of continuity, then this a can be any kind of point. It may be a limit point, that but the must condition is that this a must be in a. ओके, तो ये ए का लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, एंड मोर ओवर ये एक आइसोलेटेड पॉइंट भी हो सकता है। आइसोलेटेड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि हम ये मान लो ए है, अगर हम कोई एक ऐसा पॉइंट देखें जिस पर हम एक ऐसी बॉल बना पाएँ जिसमें इस पॉइंट के अलावा इस ए का और कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा हो, then in that case this point, this green dot is isolated point. That means we can isolate this point by an open pole. तो
तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी हम आइसोलेटेड पॉइंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं और लिमिट पॉइंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं। द कंडीशन वी रिक्वायर्ड इज ओनली दैट ए मस्ट बी इन द सेट ए ओनली। ओके, सो the second observation is about the point A. Okay, the point A can be, एंड ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट के आगे का कंसेप्ट है कंटिन्यूटी। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट लिमिट पॉइंट ही होना चाहिए। हम आइसोलेटेड पॉइंट पर लिमिट की बात नहीं कर सकते। ओके, आइसोलेटेड point. Okay, so what we want to say that in the definition of continuity we have placed no restriction on the nature of the set A, or which is the domain of function. Okay, set A which is domain of F, right? It may happen that A is an isolated point of A। ठीक है, तो ये बात हुई आइसोलेटेड पॉइंट्स के बारे में। अगर हम कहें कि ये जो हमारा ए पॉइंट है दैट इज़ लिमिट पॉइंट, तो हमें पता है जब भी किसी सेट का लिमिट पॉइंट हमारे पास है तो इस सेट में हमेशा हम एक ऐसा सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि उस पॉइंट पर ही कन्वर्स कर देगा, राइट? तो इस केस में जब हमारा पॉइंट लिमिट पॉइंट है फॉर दिस ए विच इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन इन दैट सेंस हम कंटिन्यूटी को सीक्वेंस की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,